यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैशेषिका स्कूल। वैशेषिका स्कूल से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट दिया है और उसको मुझे देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ पहला कह रहा स्टेटमेंट that it believe in the physicality of the universe and is considered to be the realistic and objective philosophy that govern the universe। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वैशेषिका स्कूल बिलीव करता है फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स में और ये कंसीडर करता है टू बी रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव फिलोसफी दैट गवर्न द यूनिवर्स। दूसरा कह रहा है भाई, दूसरा कह रहा है they argue that everything in the universe is made mainly by is mainly created by the water, not mainly. There is the five element they have said, that is fire, water, sky, and sky, water, fire, ether, you can say, and air, you can say. That is five element. There is the not only the mainly the water. So second statement is correct. It developed the atomic theory, that is third statement. It is developed the atomic theory, that is all the material objects are made of the atom. So this third statement is also correct. Third statement is also correct. Yes, it developed the atomic theory, that is all the material objects are made of the atom. So next telling that how many of the above statement are correct. So we have seen second statement is incorrect. So B is the आपका B होगा जो correct statement होगा. B is the correct statement. Next question, second question is asking here that one of the most important building in the फतेहपुर सीकरी, it is also known as the dream of the stone, and कौन सा वो महल है, वो कौन सा आपका बिल्डिंग है। यहाँ पर चार बिल्डिंग दे रखा है। पहला दे रखा पंचमहल, दूसरा दे रखा हवा महल, तीसरा दे रखा जंतर मंतर, एंड चौथा दे रखा है मीनाक्षी टेम्पल। तो ये जो ये वाला है पंचमहल को इन फतेहपुर सीकरी, उसको दूसरा नाम से ड्रीम ऑफ स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अभिधम्मा पीठिका। अभिधम्मा पीठिका से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ये कह रहा है अभिधम्मा पीठिका इट इज अ स्क्रिप्चर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। नो, इट इज नॉट a scripture of Mahayana Buddhism. It is a sculpture of Theravada Buddhism. Theravada Buddhism is the sculpture of the Abhidhamma Pitaka. So first statement is incorrect. Second statement telling that it contains the Buddhist philosophy. Yes, second statement is correct. And third statement is telling that it was first compiled in Sanskrit and then translated to Prakrit. No, sorry, this is incorrect. This is a compiled in, you can say, Pali language. Okay, so one and third is incorrect, and one second is correct. So according to you, this we have only one is correct answer. A is the correct answer. Next question is question number 5, asking that the Vedic literature is broadly divided into two categories, which Shruti and Smriti. What is the difference between them? ये श्रुति एंड स्मृति दो गो वैदिक लिटरेचर है जो जिसमें डिफरेंस पूछ रहा है। क्या डिफरेंस है भाई? तो ऑप्शन ए में दे रखा है, स्टेटमेंट ए में दे रखा है श्रुति इज कंसिडर इंटरनल whereas स्मृति इज कंसिडर सब्जेक्ट टू चेंज। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करा दूसरा स्टेटमेंट करा स्मृति फिलोसफी स्टैंड इन द डायरेक्ट ओपोजिशन और कंट्रेस्ट टू द श्रुति फिलोसफी। नो, दिस इज नॉट ए कंट्रडिक्शन और you can say opposition. They are continuous. Smriti and the Shruti are the continuous to each other, and they are the almost similar. You know, they are no opposite and direct opposition and contrasting between them. So the second statement incorrect. Or here asking which statement, which of the above statement are incorrect. So as incorrect statement asking, or we have seen only two is the incorrect statement. So answer is B. Next is asking question. Next question is asking फर्म साना शेखरी एंड बलाभी आर, ये क्या है भाई? ये किससे रिलेटेड है? यहाँ चार गो ऑप्शन दे रखा है और आपको
बोल रहा है सेलेक्ट द क्या है ये भाई, यहाँ पर बोल रहा है, पहला बोल रहा है a style of temple architecture practiced during the Gupta period. Yes, they are the style of temple architecture, but during the Gupta period they are practiced. No. Second same statement they have given a style of temple architecture practiced during the Gupta period. So this is also incorrect. So second C me telling that they are a style of temple architecture of the northern India. Yes, C is the correct. A prehistorical cave during the Pleistocene period. No, the Pleistocene age. No, this is incorrect. So C is the correct statement. So I would like to stop.